Good morning, students. So in the previous class we had studied, we were studying about this counseling, where we have dealt with what is counseling, what are the objectives of counseling, and what are the aims, we had started with approaches of counseling, where we have studied about different approaches like directive approach, non-directive approach, eclectic approach. So that is usually the thing that is it. हम लोग पिछले क्लास में काउंसलिंग शुरू किया था, जहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, एम पढ़ा, और हम लोगों ने अप्रोचेस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 3 अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और एक्लेक्टिक अप्रोच को हम लोगों ने पढ़ा था. And this class will start with the next approach of this counseling, that is group approach. So what is this group approach? So group approach, it is a continuous technique which is used where number of individuals will be counseled. Okay, it is a continuous technique where number of individuals will be counseled, and also it is usually done where we will be it is usually done. It is mainly done to to get some solution. Okay, it is mainly done to get some solution. And in this, each and every participant who is there in this group counseling will be having their own place and importance, and each and every individual will be given opportunity to speak. Okay, will be given opportunity to speak. So that is usually about this group काउंसलिंग. सो ग्रुप काउंसलिंग वो होता है जहाँ पे हम लोग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को इकट्ठा करेंगे और उन लोगों को हम लोग काउंसलिंग करेंगे. ग्रुप काउंसलिंग इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल सके, बिकॉज जो भी इंडिविजुअल जो भी बंदे हैं वो लोग एक ना एक सोल्यूशन हम लोगों को देंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे हम लोगों को एग्जैक्ट सोल्यूशन पता चलेगा, जिससे हम लोगों को एग्जैक्ट सोल्यूशन पता चलेगा और हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज़ यूजुअली दैट. और उसके बाद जो बंदे इस काउंसलिंग में होते हैं ना, उनको एक उनको उन्हीं की जगह उनको एक इम्पॉर्टेंस दिया जाता है, उनको एक प्लेस हो ही जाता है वहाँ पे, जहाँ पे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देते ही है, ताकि वो लोग अपना कुछ बात कर सके, अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सके, अपना सोल्यूशंस को दे सके. सो ऐसे हम लोग देते हैं. सो दैट इज़ यूजुअली ग्रुप काउंसलिंग वेयर इट इज़ यूजुअली अ टेक्निक व्हेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी counseled. This is mainly done to get the solution for the problem. So that is usually about this group counseling. So next is steps involved in this group counseling. The steps which is involved in this group counseling, it is usually the first thing is selection of participants. Okay, the steps that is involved in this group counseling, it is usually selection of participants. The first we have to select the participant, and the participants, when we are selecting, see that all the individuals or all the participants whom we are selecting, they should have common problem. Okay, all the individuals who are you all selecting, they should have common problems. Okay, they should have common problems, and also see that the individuals are willing to participate. Okay, see that we have to see that the individuals are willing to participate. So in this, usually what is that? So mainly in this it is seen that when you are selecting the participants, you have to see that each and every individuals whom we are selecting, they should have common problems, and also they should be interested to participate. Okay, they should have willingness to participate in the group counseling. तो पहला स्टेप्स हो गया हम लोगों को पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना है. जब आप लोग सिलेक्ट करोगे, ये देखना है कि सबका प्रॉब्लम एक ही होना है, सबका प्रॉब्लम एक ही होना है. और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उन लोगों को उनको उनकी मर्जी से उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना है. हम लोग ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, उनको उनकी मर्जी होना चाहिए जब वो लोग ग्रुप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होके. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस. फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट. सो नेक्स्ट इज स्टार्टिंग ऑफ सेशन. Next thing is the starting of session, where we will be where we are planning for the group meeting, where it should be conducted, date, venue, everything should be planned. So that we will be planning, and then a counselor will be introducing themselves. Okay, they will be introducing by themselves, and also self introduction by each member. Okay, self introduction by each member. तो पहला हो गया selection of participant, दूसरा हो गया फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, द नेक्स्ट इज स्टार्टिंग ऑफ द सेशन. ओके, पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट और दूसरा हो गया स्टार्टिंग ऑफ सेशन, जहाँ पे हम लोग कहाँ पे मीटिंग रखना है, कब रखना है, कौन रखेगा, ये सब हम लोग देखेंगे. उसके बाद जो काउंसलर करता है, जो काउंसलर वो होता है जो काउंसिल करता है, काउंसलर वो होता है जो काउंसिल करता है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देगा. उसके बाद जो ग्रुप में मेंबर्स है वो लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे, वो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में बताएंगे. ओके, अपने बारे में बताएंगे, जैसे उनका नाम, कहाँ से आए, क्या ये सब वो लोग बताएंगे अपने बारे में. सो वो हो गया सेकेंड स्टेप. The third, it is orientation for discussion. Okay, orientation for discussion. So in this, they will be discussing about the problems, where counsel will be leading the session. Okay, where counsel will be leading the session, and then he will encourage all the participants in the discussion, and then they will be telling about the purpose of meeting. So next is orientation for discussion. Okay, so next is orientation for discussion.
where counselor will lead the session and also they will be encouraging the participants to इन्वॉल्व इन दी डिस्कशन. तो तीसरा हो गया डिस्कशन का ओरिएंटेशन दिया जाएगा जहाँ पे काउंसिलर लीड करेगा, जो स्टार्ट करेगा मतलब जो काउंसलर वो स्टार्ट करेगा और यहाँ पे जो भी बंदे इन्वॉल्व हैं उन सबको चांस दिया जाएगा, मतलब उन सबको बोला जाएगा कि वो लोग डिस्कशन में इन्वॉल्व हो. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस ओरिएंटेशन फॉर डिस्कशन. So next is checking for unwanted behavior. So next step it is checking for unwanted behavior. So in this usually checking for unwanted behavior it mainly includes, that is they have to see that each and every individuals participate, they will not resist or they will not show any kind of resistance to the group counseling. They will not show any resistance to the group counseling. So that is they should not have any kind of negative attitude. Okay, they should not show any kind of negative attitude. So that is usually about this checking of unwanted behavior. Checking of unwanted behavior, it is usually seen where each and every participant, like they have to see that each and every participant are involved in the group discussion. They will not resist or they will not show any kind of negative attitude. Okay, they will not show any kind of negative एटीट्यूड. सो दैट इज़ यूजली अबाउट दिस चेकिंग ऑफ अनवांटेड बिहेवियर. सो दूसरा अगला स्टेप हो गया, हम लोगों को वहाँ पे मतलब बिहेवियर चेक करेंगे, मतलब वो बेकार का बिहेवियर नहीं दिखाई देगा, वो बेकार का बिहेवियर नहीं दिखाई देखेंगे मतलब जो भी इन्वॉल्व है, जो भी इन बंदे इन्वॉल्व है वो लोग अपना मतलब इंटरेस्टिंगली मतलब वो खुद से अपनी मर्जी से इन्वॉल्व करेंगे. वो लोग कुछ नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे, वो लोग कुछ नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे या नेगेटिवपन नहीं दिखाएंगे उन लोगों को कि उनको पसंद नहीं है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों करना है, ऐसे क्यों करना है, ऐसे बातें नहीं बोलेंगे. सो जिससे सेशन में असर पड़ेगा. इसलिए हम लोगों को ये जो अनवांटेड बिहेवियर होता है ना उसको हम लोगों को चेक करना ज़रूरी है. सो दैट इज़ यूजुअली अबाउट दिस चेकिंग ऑफ अनवांटेड बिहेवियर. सो नेक्स्ट इज सेल्फ डिस्क्लोजर. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फ डिस्क्लोजर where each and everybody will be telling about their personal experience. Okay, they will be telling about their personal experience, they will share about their personal information, where each and every individual will share about their personal information as well as personal experiences. So that is usually about this self डिस्क्लोजर. तो दूसरा स्टेप हो गया सेल्फ डिस्क्लोजर, जहाँ पे बंदे अपने बारे में खुद से शेयर करेंगे, सबसे जो भी प्रॉब्लम है उनको, जो भी एक्सपीरियंसेस हुआ है सब लोग अपना पर्सनली अपने बारे में बताएंगे. So next is decision making. So next is decision making. So in this usually what happens, whatever the decision that they are taking, okay, whatever the decision that they are taking, so that they'll see that it has been acceptable to all. Okay, so what are the decision that is this decision making will be done when all the problems will be like everyone's problem will be assessed or everyone's problems will be listened. After that they'll be making this decision. Okay, they'll be making this decision, and in this usually they'll be having open communication. Okay, they can have this open communication. So that is usually about this things, and usually so that is usually about this decision making. That is where they'll be taking about decision about the how to solve the problems whatever it is been discussed, and here whoever is telling the solution for the problem, that will be respected. Okay, that will be respected. So that is usually about this decision making. So दूसरा अगला स्टेप हो गया डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे जो भी बंदे को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनका सोल्यूशन सभी से पूछा जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, और जो भी बोल रहे हैं ना सब लोगों का डिसीजन मतलब सब लोगों का जो सॉल्यूशन बोल रहे हैं उनका वो मतलब इज्जत दिया जाएगा, रिस्पेक्ट दिया जाएगा उनकी वैल्यूज़ का. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस डिसीजन मेकिंग. So here in this step usually what happened, they have taken decision how to solve the problem. So next is closure. So here it is usually the termination of this that they will be closing the group counseling, okay, or closing of the session. Okay, closing of the session. So where they will conclude the session and they usually close the session. So that is usually about this closure. So these are usually the steps involved in this group counseling. So it is mainly the different selection of participation, start of session, orientation for discussion, seeing unwanted behavior, self disclosure, decision making and closure. तो क्लोजर में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बंद कर रहे हैं सेशन को, मतलब जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व करने का सोल्यूशन दे दिया है, उसके बाद हम लोग मतलब काउंसलिंग को सेशन को बंद करेंगे. सो दैट इज, और ये जो करता है वो काउंसलर ही आगे आके कंक्लूड करता है. सो दिस इज यूजुअली अबाउट दिस डिफरेंट स्टेप्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ग्रुप काउंसलिंग. So next is advantages and disadvantages of this group counseling. So what are the advantages? It is economic, as it saves time. Okay, it saves time. So where one problem, okay, where the people are having the same problem can be counseled at a time. Okay, the people who are having same problem can be counseled at a time. It usually saves time. So that is usually economic. Next is time saving. It also saves the time. Okay, so it also saves the time. So it is economic. It saves the time, and then
It is usually intrinsic motivation. Okay, so there is intrinsic motivation because the participants involve themselves in the counseling. The participants involve completely themselves in the counseling. So where they will be motivating themselves to solve the problem. Okay, they will be motivating themselves to solve the problem. So that is usually the advantages of this group counseling. So what are the advantages? It is economic, as it can be like we can, as all the people with the same problem can be counseled at a time. It saves money, then time saving, it also saves the time. Then it usually motivates, like intrinsic motivation can be given. So मतलब यहाँ पे जो एडवांटेज, मतलब ये पैसा बचाता है, जैसे कि सबको एक ही बंदों का जो प्रॉब्लम होता है एक ही टाइम पे हम लोग कर सकते हैं, जिसके हम लोग को टाइम बचेगा, पैसे बचेगा, और हम लोग ऐसे मतलब सभी को इन्वॉल्व होने का चांस दे रहे हैं ना, यहाँ पे सभी को इन्वॉल्व होने का चांस दे रहे हैं, जिससे क्या होता है वो लोग इंट्रेंसिक मोटिवेशन को बढ़ा सकता है. सो देयरफॉर दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस इंट्रेंसिक motivation. So next is disadvantages is that unwanted behavior can arise. Okay, unwanted behavior can arise like negativity, resistance. So all this behavior can arise when there are group of people. So दूसरा disadvantage यही होगा ना, मतलब अनवांटेड बिहेवियर दिखाई देगा, जैसे कि वो लोग, कुछ लोग को पसंद नहीं आएगा जो बोल रहे हैं, जो दूसरे बोल रहे हैं उन लोगों को पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बढ़ेगा. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस disadvantages of group counseling. So this is about this group counseling. So group counseling, it is nothing but when number of individuals will be counseled at a time. So that is usually about this group counseling. Steps includes selection of participants, start of session, the orientation for discussion, unwanted behavior will be checked, self disclosure, then decision making, closure, as well as follow up will be there. So these are usually the steps involved in this group counseling. So next is usually about this thing. This is about this group counseling. So next is role of counselor. We'll see what are the roles of counselors. So there are certain specific roles which is usually given by counselor by different psychologists. Okay, like different people, they give their opinion like what are the role of the counselor. So in this, according to Mayer's view, okay, according to Mayer's view, so they are the functions of this counselor. The role of counselor is that they have to first schedule the interview, then they have to set up the interview, then they have to prepare the interview, then they have to conduct the interview, and then they have to record the interview. So there is role of counselor. This is usually different, which is where they have different people give their opinion regarding this role of counselor. Okay, regarding the role of counselor. So what are the roles according to Mayer's view? So they have the roles. It usually includes is that they have to schedule the interview, set up the interview, and then they have to prepare for the interview, then they have to conduct the interview, and then they have to record the इंटरव्यू. तो मतलब ये जो रोल है ना काउंसलर का, मतलब उसका क्या काम होता है, ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, डिफरेंट पीपल ने ना, मतलब उनका जो ओपिनियन दिया है, डिफरेंट पीपल ने उनका ओपिनियन दिया है, जिसमें पहला हो गया मेयर का ओपिनियन, जिसमें उसने बोला है कि काउंसलर का काम ही होता है पहले उन लोगों को शेड्यूल करना है, मतलब कब इंटरव्यू करना है, कब उनके साथ बातें करना है, वो शेड्यूल करना है. उसके बाद इंटरव्यू क्या अरेंज करना है, मतलब सेटअप करना है इंटरव्यू का. उसके बाद उसके लिए प्रिपेयर होना है, प्रिपेयर होने के बाद उसको कंडक्ट करना है, मतलब जो बंदे को बुला के उसको काउंसिल करना है तो कंडक्ट करना है. उसके बाद जो भी कंडक्ट किया है उसने इंटरव्यू को, उसको रिकॉर्ड करना है. तो शेड्यूलिंग द इंटरव्यू, सेटिंग अप द इंटरव्यू, प्रिपेयरिंग द इंटरव्यू, कंडक्टिंग द इंटरव्यू और रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस Mayer's view. So next is according to Stewart's view. Okay, according to Stewart's view. So यहाँ पे in this usually what it is done is that first thing is that they have to collect the data. Okay, they have to collect the data about the individuals. What are the roles that they have to do? They have to collect the data from the individual. Then they have to understand their problems and needs. Okay, they have to understand their problems and need. Then after that they have to interview with them. Then they have to provide like remedial work. Okay, they have to provide remedial work for the academic performance or for the social adjustment, everything they have to do. Then group guidance should be given and coordinating school activities. Again, coordinating school activities. So that is usually about this Stewart's view. So that is first they have to collect the information, then they have to understand the needs and problems of the individual, then they have to see remedial work should be done in the academic performance. ग्रुप गाइडेंस शुड बी गिवन एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग स्कूल एक्टिविटी. सो स्टीवर्ट के व्यू से उनका काम यही होता है ना, मतलब उन लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसके बाद उनका प्रॉब्लम्स और नीड्स को जानना है, उसके बाद उनको रेमेडियल वर्क, प्रॉब्लम्स और नीड्स को जानने के बाद उनको कैसे कम करने के लिए रेमेडियल मेजर्स लेना है, उसके बाद हम लोगों को उन लोगों के ग्रुप गाइडेंस देना है. सो ये सब जो भी होता है ना वो स्टीवर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब उसका राय है काउंसलर का काम क्या होता है. सो दैट इज यूजुअली दैट.
So next is, this is about this role of counselor, which is according to different people give their own opinion. So next is role of counselor. So what are the role of counselor? So there are different role of counselor. It is qualities of counselor. So what are the different qualities of counselor? So next is qualities of counselor. So what are the qualities that a counselor should possess? It is that mainly they should be checked about their personality and also training as well as experience. Okay, personality, training as well as experience. When we are talking about this personality, okay, when we are talking about this personality, so that is they should have breadth of interest. Okay, the counselor should have interest in their own task. Okay, they should have interest in their own task. Then only they will be able to interview with the individuals. Okay, then only they will be having interview with the individuals. So that is they should have first interest. Then they should cooperate. Okay, they should have cooperation. So that is they should cooperate with all the other staffs as well as with the individuals. So cooperation should be there. Then they should have like refinement. Okay, they should have refinement in the sense they should be humble towards everyone. Okay, they should be humble towards everyone. So that is refinement should be there. Then magnetism. Okay, so the next thing is that they should have, it is that magnetism should be there. So that is the qualities of the counselor should attract everyone. Okay, that is the qualities the counselor should attract the individual. So that is usually about this personality traits that a counselor should possess. So they should have interest, they should cooperate in work, they should magnetism as well as refinement should be there. तो क्वालिटीज काउंसलर का क्या होगा, मतलब पर्सनालिटी, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होता है. पर्सनालिटी में हम लोग क्या देखते हैं, पहले बंदे को इंटरेस्ट होना है, जो काउंसिल कर रहा है उसको इंटरेस्ट होना है. उसके बाद उसको कोऑपरेटली, मतलब वो सबसे मिलजुल के काम करना है तभी होगा. उसके बाद रिफाइनमेंट होना है. रिफाइनमेंट होता है मतलब वो हम्बल से बिहेव करना है, मतलब उसको बहुत ही सादगी से बिहेव करना है सबके साथ, बहुत ही मतलब झुक के आराम से, मतलब इतनी इंसानियत के तौर तरीके से उन लोगों को बातचीत करना है. उसके बाद हो गया मैग्नेटिज्म. अगर उनका क्वालिटीज़ ऐसे होना है ना कि सब लोग उनको अट्रैक्ट कर सके, सब लोग उनके पास ही आए, उनको ही बोले कि, क्योंकि वो लोग समझेंगे ना. जैसे कि आप लोग के पास होगा जिस टीचर से आप लोग बहुत, मतलब जिस टीचर से आप लोग बहुत पसंद करते हो उनको, मतलब उनका क्वालिटीज़ जब आप लोगों को पसंद होता है तो आप लोग उन्हीं के साथ जाके उन्हीं से अपना प्रॉब्लम शेयर करते हो ना कि प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है. ऐसे ही उनका जो क्वालिटीज़ होता है ना काउंसलर का, वो बहुत ही मतलब अच्छा होना है, तभी वो लोग बाकी सब उनको अट्रैक्ट करेंगे. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस पर्सनालिटी क्वालिटीज दैट शुड द काउंसलर शुड प्रोसेस. सो नेक्स्ट इज ट्रेनिंग. So they should have good training. Okay, so the counselor should have good training. Okay, they should have good knowledge, good objective, good knowledge about this. They should have awareness about the principles. They should have awareness about what are the things that they have to talk with the others, what are the things that they have to do, like occasional guidance if they want to provide, so how they can provide. So all these things they should have. So that is usually about this. And then also they should have experience also. Okay, they should have experience also before conducting the counseling. So that is usually about this. Qualities of counseling. So they should have good personality trait, they should have good training, they should have good experience before starting up the session of counseling. So उनको मतलब पर्सनालिटी अच्छा होना है, उनको ट्रेनिंग भी होना है, मतलब उनको अच्छे से नॉलेज सब होना है जब काउंसिल करने से पहले. उसके बाद उन लोगों को अच्छे से एक्सपीरियंस भी होना है, उनको अच्छे से एक्सपीरियंस भी होना है जब, मतलब ताकि वो लोग अच्छे से काउंसिल कर सके. सो दैट इज यूजुअली द क्वालिटीज ऑफ काउंसलर, दैट इज पर्सनालिटी ट्रेट, training as well as experience. So that is usually about this thing. So next is preparation of counselor. So what are the steps that is involved in preparation of counselor is that first is educational preparation. So how we can prepare the counselor is that first is educational preparation. So they should have either master or bachelor degrees. Okay, they should have either master or bachelor degree in teaching and education. They should have master or bachelor degree in the teaching and education. Then they should have experience, like experience, they should have 2 years of experience in teaching or counseling. Okay, they should have 2 years of experience in teaching or counseling. So that is should be there. Then personal fitness, that is good medical health should be maintained. Okay, good physical, mental and social health should be maintained by the individuals. So this is usually the preparation of counselors. So what are this? Educational preparation, experience as well as physical health. So it is education, they should have either bachelor or master degree in teaching or education. And then experience, they should have either 2 years of experience in teaching or counseling, and they should maintain good physical health. Okay, so next हो गया टॉपिक हो गया प्रिपरेशन ऑफ काउंसलिंग. मतलब हम लोग काउंसलर को क्या क्या ज़रूरत है, उनको क्या क्या किस चीज़ का ज़रूरत है, जब अगर उन लोगों को पक्का वाला काउंसलर बनना है तो उनको क्या क्या ज़रूरत है. पहले हो गया पढ़ाई तो उनको इधर मास्टर डिग्री कंप्लीट करना है या बैचलर डिग्री कंप्लीट करेंगे टीचिंग या एजुकेशन में.
और उनको एक्सपीरियंस होना है, जैसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना है अदर टीचिंग लेवल में या काउंसलिंग के लेवल में। और तीसरा हो गया मेन थिंग मतलब फिजिकल हेल्थ, अपना फिजिकल हेल्थ अच्छे से रखना है, तभी वो लोग काउंसलिंग कर पाएंगे। सो दिस इज यूजुअली अबाउट द स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ काउंसलर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड हेल्थ. So that is usually about this preparation of counselor. So next is stages of counseling. So what are the different stages of counseling? So when we start counseling, what are the things that we have to keep in mind to carry on this stages? Okay, to carry on this stages. So what are the stages of this counseling? It is mainly includes first is establishing relationship. Okay, the first phase it is establishing relationship. So this is the first foundation of this counseling where we have to establish good relationship with the counselee so that he will be able to share their problem with us. Okay, they will be able to share their problems with us. So this usually when we are establishing good relationship, it usually develops trust. Anyway, you have already studied like interpersonal relationship you might be studying. So where it usually develops trust. So that is establishing relationship. Then the second is assessment. So in this establishing relationship, when we establish trust on the individual will be sharing all the problems with us. Okay, the individual will share all the problems with us. So when they are sharing the problem, see that they will not have any kind of disturbance. Okay, they will not have any kind of disturbance. When they are telling something, you should not laugh at them, you should not smile at them, you should listen properly, and they are talking and you will not be able, you should not be talking to any others. So all these things should be maintained. Okay, all these things should be maintained. So that is usually about this establishing relationship. So next is assessment. So in this first step you would have known about the problems of them. So now we have to assess. Okay, now we have to assess, where you will be asking questions to them. By asking question you will be collecting other information also. Okay, you will be collecting other information also, so that you can exactly know what exactly you will know exactly what is the actual problem. So that is the assessment. Next is setting up goals. So now you know what is the exact problem of the counselee. So now you will be setting up the goal. Okay, now you will be setting up the goal. So here you have to set up the goal, where you will be setting up the goal immediately or ultimately. Okay, so that is you have to immediately set up the goal so that you can solve the problem of the counselee. So next is intervention. Now you will be planning like what has to be done. Okay, what has to be done so that you can solve the problem of the counselee. Okay, you can solve the problem of the counselee. The last stage it is termination of the session. Okay, termination and follow up. Okay, last stage it is termination and follow up, where you will be terminating, like you will be telling about, you will be concluding the session. Okay, where you will be concluding the session, and also you will be planning like what they have to do in future. Okay, and also you will be planning what the things that they have to do in the planning. So that is usually about the stages of counseling. So first is establishing relationship, where you will be establishing the relationship so that trust develops, as well as they will be able to share their problems. Next is assessment. So now you will be assessing by asking questions to them, like you to know about to get more information from the counseling. Then you have to set up the goal. Then intervention should be planned, like you have to plan what the solutions that will be suitable for solving the problem. Then the last stage it is termination and follow. तो यहाँ पे जो स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग होते हैं, मतलब 5 स्टेज होता है, जहाँ पे पहला हो गया एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप. तो यहाँ पे जो हम लोगों को पक्का वाला अच्छा वाला रिलेशनशिप डेवलप करना है, जैसे कि IPR पढ़ा होगा आप लोगों ने नर्सिंग फाउंडेशन में. अगर हम लोग अच्छा वाला रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बंदे के साथ, तो वो अपने आप पर भरोसा करेगा, वो अपने आप में भरोसा. जैसे कि आप लोग अपना प्रॉब्लम अपने मम्मी पापा को शेयर करोगे, क्यों शेयर कर रहे हो? क्योंकि आपको उन पर भरोसा है, इसलिए आप लोग आपका प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करते हो. और कुछ प्रॉब्लम आप लोग अपने दोस्त के साथ भी शेयर करते हो, क्योंकि आप लोगों उन पे भी भरोसा है, इसलिए शेयर करते हैं. ऐसे ही रिलेशनशिप आप लोगों को डेवलप करना है. जब आप लोग किसी को काउंसिल करोगे, तो पहले हम लोगों को रिलेशनशिप डेवलप करना है अच्छे से, ताकि वो लोग आप पे भरोसा कर सके और अपना प्रॉब्लम आपके साथ सब कुछ शेयर करें. और ध्यान रखिए, जब आप लोग को मतलब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम ना हो. जैसे कि अगर वो लोग आपसे कुछ बात कर रहे हैं तो आप लोग उनको ही ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर मत देखिएगा, इधर उधर दूसरे से बात मत कीजिएगा. जो भी होगा इंटरप्शंस नहीं होना है, आवाज़ को कम, मतलब दूसरे से बाहर से कोई आवाज़ ना आए तो जाके उनको डिस्टर्ब करे, ऐसा वाला सब हम लोगों को अवॉइड करना है. तो उससे क्या होता है, आप पे उनको ट्रस्ट डेवलप होगा और वो आपको सब कुछ बताएंगे. सो इट इज एस्टैब्लिशिंग ऑफ रिलेशनशिप. सो नेक्स्ट इज असेसमेंट. तो आप लोगों ने यहाँ पे तो देख लिया होगा, मतलब आप लोगों ने उनसे ट्रस्ट डेवलप कर दिया, उन्होंने कुछ बोला होगा आप लोगों को, तो आप लोगों को अब असेस करोगे. आप लोग अपने ओर से आप उनको क्वेश्चंस पूछोगे, जैसे भी इंटरव्यू करोगे उनसे, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो.
आप लोगों ने असेस कर लिया, अब आप लोगों को गोल सेट करना है कि आप लोग ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से सॉल्व करना है, क्या करना है, सब कुछ आप लोग गोल को सेट करोगे। उसके बाद इंटरवेंशन करोगे, मतलब प्लान करोगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या करना है, और जो गोल्स आप लोगों ने डेवलप किया है प्रीवियस स्टेप में उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो ये सब आप लोगों को करना है। इसके लास्ट हो गया टर्मिनेशन ऑफ फॉलोअप, जहाँ पे आप लोग कंक्लूड करोगे सेशन को, उनको बहुत समझाओगे और तरीके से, और आप लोगों को उनको बोलोगे कि फ्यूचर का क्या क्या प्लान हो सकता है, ये सब आप लोग उनको बोलोगे। सो दैट इज टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। सो दिस आर द स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग: एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, setting up assessment, setting up of goal, interventions और termination and follow up। तो ये हो गया these are usually stages of counseling। So next is techniques of counseling। So there are different techniques of counseling which is usually used। So what are the different techniques of counseling? We will see what are the different techniques of counseling. The first is problem solving technique. The first is problem solving technique. So in this problem solving technique, in this usually it is a creative process. Okay, it is usually a creative process where we will be evaluating the individuals. Okay, we will be evaluating the individuals, how they adjust. Okay, how they adjust with the environment, how they make new choices. All this thing will be done in this problem solving technique. So in this what we do, first we gather information, then we will first we'll identify the problem, then we collect information, then we will be hypothesizing, like we will be planning like what is the solution it might be. Like we will be having many solutions for one problem. Okay, we will be having many solutions for one problem. So that we will be doing. Then we will be making the then we will be taking the decision, and then we will be, after taking the decision, we will be implementing the solution. Then follow up will be done. So in this problem solving technique, it is usually done where we will be identifying the problem, and after identifying the problem, we will be collecting the information. After collecting, we will be hypothesizing the solution, because for one problem we will be having different solution. Then decision making will be done. After decision making, interventions, implementation will be done. Then last is follow up. So problem solving, it is usually a creative technique. Okay, it is usually a creative technique where we will see how the individual adjusts with himself as well as with the environment. So that is problem solving technique. So next is discussion technique. So in this discussion technique, where each and every individual will be discussing about their problems and how to solve the problems. So after doing this discussion, we can get the exact solution for the problem. So that is usually about this discussion technique. So next is role playing technique. So this is mainly to develop skills and insight. Okay, this is mainly done to develop skills and insight of an individual by acting out the situation. Okay, by acting out the situation, and this is acting out the whatever the role play that is done, it will be similar to that of the life situation. So it will be the role play should be done which is similar to that of the life which is similar to that of the life skill real life problems. It will be similar to that of the real life problems. So it is role play technique. It is usually the technique which is used to solve the problems by playing role play, and the role play whatever you are using, it is usually done, it will be similar to that of the real life situations. So it will be similar to that of the real play, so real life problems. So that is type of psychodrama or sociodrama. So that is usually about this thing. So next is lecturing will be there, where will be lectures will be delivered by the expert counselors. Then usually what happen, like conferences will be held. Okay, conferences will be held. Then reciprocal inhibition will be done. Okay, reciprocal inhibition will be done. So by this technique, this will be helpful with the people who are having fear and anxiety. Okay, people who are having fear and anxiety. So in this, usually what we do, we just ask them to imagine the situation. Okay, we will be having to imagine the situation so that they will not be fearful. Okay, they will not be having threatening or fear about the situation. So these are usually the techniques of counseling. So problem solving technique, discussion technique, role play technique, lectures, conferences, as well as reciprocal inhibition. So it is usually about this techniques of काउंसलिंग. So टेक्निक ऑफ काउंसलिंग डिफरेंट होता है. जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बंदे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब उनका क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे, हाइपोथेसिस डालेंगे, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन हो गए ना एक प्रॉब्लम को, तो हम लोग पूरा का पूरा सोल्यूशन निकालेंगे, उसमें से हम लोग एक सोल्यूशन को डिसाइड करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फॉलो अप करेंगे. तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन टेक्निक. दूसरा हो गया डिस्कशन टेक्निक, जहाँ पे हम लोग जो भी सिलेक्ट किया है, जो भी सोल्यूशन हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, वो प्रॉब्लम मतलब जो भी है
या जो भी सोल्यूशन हम लोगों को चाहिए हम लोग सभी बंदों से डिस्कस करेंगे और हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। रोल प्ले टेक्निक वहाँ पे होता है जहाँ पे हम लोग एक्ट करके दिखाएंगे कि मतलब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और जो भी एक्ट हम लोग करेंगे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही होगा। और दूसरा हो गया मतलब लेक्चर, जहाँ पे हम लोग लेक्चर करेंगे, मतलब उनसे बातें करेंगे, काउंसलर बातें करेगा, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तकनीक दिखाएगा। उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करेंगे हम लोग, और लास्ट हो गया रेसिप्रोकल इनहिबिशन। यहाँ पे हम लोग उस बंदे को जो प्रॉब्लम हुआ है ना उसको याद करने के लिए बोलेंगे और फिर उसको गैप देंगे और फिर से उनको याद करने के लिए बोलेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक वो रिलैक्स हो जाएगा। जब उसको पता चल जाएगा हाँ ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये सोच के वो बंदा रिलैक्स हो जाएगा, तब तक हम लोगों को उनको ऐसे ही करने के लिए बोलेंगे कि तुम लोग उस प्रॉब्लम को याद करो फिर चुप हो जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर से कहेंगे कि याद करो फिर चुप होने के। सो दिस इज यूजुअली ये सब हो गया टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, डिस्कशन टेक्निक, रोल प्ले टेक्निक, लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस और हो गया रेसिप्रोकल इनहिबिशन। सो दिस अबाउट दिस टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। तो you get technique. So next is tools used in counseling. So what are the tools that we use in counseling to carry on the counseling session? So it is usually we use testing tools and non-testing tools. Testing tools, it is non-testing tools, it is mainly includes like interview. It is a conversation where face-to-face interview will be run, where we'll be asking directly to the questions to the individual. It's a communication type where we'll be asking to the questions to the individual and we'll be able to tell about the thing. And next is observation, where we'll be observing the counseling, okay, where we will be observing the counseling. So that is usually done. Then records, okay, so there will be checking about the records, where like any records we'll be checking out if there is any important incidents that has happened to the individual, so that can we be getting from the records. So that is usually the sociometry, like how he is maintaining a sociometry in this usually used to measure their social behavior. It is mainly used to measure their social behavior, whether he is adjusting with other individuals or whether he is talking with other individuals. So all this thing will be done. So this is non-testing tools. Non-testing tools, it is usually by conducting interviews where we'll be having face-to-face conversation with the individuals, where we'll be where we're collecting the data. So next is observation, where we are observing the person whom we have to counsel. Next, records will be checked, where we'll be getting about any incidents has been occurred in the individual, so that we'll be checking about that. So it is sociometry, where we'll be measuring about their social behavior, okay, where we'll be measuring about their social behavior. So next is testing tools, where we go with psychological test tools, where we have studied in the psychology, like intelligence test, then where we'll be checking about the aptitude test, interest, everything will be assessed, okay. Intelligent test, so this is Binet has given this intelligent test, where we'll be checking about mainly to check about the interest and aptitude, okay, interest and aptitude. So that is usually about the psychological test. तो दूसरा हो गया टेस्टिंग टूल्स इन काउंसलिंग, जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि नॉन टेस्टिंग टूल्स होगा, टेस्टिंग टूल्स होगा। नॉन टेस्टिंग टूल्स वो होता है जहाँ पे हम लोग जैसे कि इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, बंदे को फेस से फेस बातें करेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हो गया ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करते हैं काउंसलर को, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो लोग कैसे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड्स चेक करेंगे कि उनके लाइफ में अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद उसका सोशियोमेट्री मतलब उसका सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा, वो सोशल बिहेवियर कैसा होगा, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। सो दैट इज यूजुअली अबाउट द सोशियोमेट्री। सो ये हो गया नॉन टेस्टिंग टूल्स। टेस्टिंग टूल्स मेनली इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, जो आप लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ाया ही है मैंने। जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो बिनेट ने दिया था, जहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड चेक करेंगे और उसका एबिलिटी, वे ऑफ थिंकिंग हो गया, उसका वे ऑफ थिंकिंग भी हम लोग चेक करते हैं इंटेलिजेंस में। सो दिस इज अबाउट दिस टूल्स यूज्ड इन काउंसलिंग. So this is about this counseling. So in this class we studied about the last approach of counseling, that is group counseling. Then we studied about the role of counselor, which is usually given by different view, like Mayer view and Stewart view he gave. Then we studied about the stages of counseling. Then we about the techniques of counseling. Stages of counseling, it might be like establishing relationship. What are the next thing that is usually then? Establishing relationship will be studied. Then we have to set up the goal. So all this thing it is usually studied in this thing. Then intervention it is done. Session how to be started. Termination. So all this is stages. Then we studied about the techniques. Techniques में हो गया problem solving, discussion,
techniques हो गया problem solving, discussion, role play, lecture, conferences as well as inhibition. And then we studied about these tools of counseling, which usually mainly includes non-testing tools and testing tools. So this is usually about this counseling which is usually done. So counseling, it is nothing but where people will be counseled for their problems, so that they will be having confusion, like what are the things that has to be done or what is not to be done. So such type of people will be counseled so that they will be able to solve their problems. So this is about this counseling.